इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे सेल कल्चर के हवाले से। जब हम किसी रिसर्च आर्टिकल को देखते हैं उसमें हमें दो किस्म के टर्म्स के साथ वास्ता पड़ता है, इन विवो एंड इन विट्रो। इन विवो रेफर्स टू एनी स्टडी दैट इज बीइंग डन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अगर उसी किस्म की स्टडी आउट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज और इन द लैब की जाए तो उसको हम इन विट्रो स्टडीज कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सेल्स दे कम टुगेदर टू मेक अप द टिश्यूज they come together to make up the organs, and different organs they make up an organism. हमें अगर किसी लेवल के ऊपर किसी किस्म की स्टडी सिर्फ सेल्स के ऊपर करना होती है तो we have to isolate the cells from that particular organ, from that particular tissues. इस किस्म की स्टडी को हम सेल कल्चर का नाम देते हैं। और ये सेल्स जब आइसोलेट कर लिए जाते हैं, इनको लेबोरेटरी में ऐसी कंडीशंस फेवरेबल प्रोवाइड की जाती हैं कि ये अपना सेल साइकिल कंटिन्यू रखें और एक सेल से दूसरे दो सेल्स में और इसी तरह सेल डिवीजन का प्रोसेस जारी रहे। सेल कल्चर के लिए हमारे पास जो सोर्स ऑफ सेल है, दैट कैन बी ह्यूमन टिश्यू, दैट कैन बी एनिमल टिश्यू, दैट कैन बी अ प्लांट टिश्यू। अब अगर देखा जाए तो सेल्स जो है टिश्यू फॉर्मेट में अरेंज होते हैं बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाती हैं। ये ऐसे ही इसकी मिसाल है, अगर ईंटों को खड़ा करके दीवार बनानी हो तो दरमियान में जो सीमेंट लगाया जाता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हमें सेल्स को सेपरेट करना है, या तो हम उनको मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिसॉल्व करके। दैट मीन्स we can perform this separation by mechanical means or using any enzymatic action which will dissolve or which will remove the extracellular matrix. Ultimately all the cells they are going to get individually separated. These cells then are taken into the favorable conditions and they are incubated in the culture media to proceed further फॉर सेल कल्चर। जैसे ही हम टिश्यू से सेल्स आइसोलेट करते हैं, चाहे मैकेनिकली किया जाए उनको या एंजाइमेटिक एक्शन से किया जाए, और उनको ट्यूब्स में या फ्लास्क में कल्चर किया जाए, इस कल्चर को प्राइमरी कल्चर का नाम दिया जाता है। अगर सेल कल्चर में देखा जाए, एक प्राइमरी कल्चर है, दूसरे नंबर पे कॉन्टिन्यूस कल्चर आता है। प्राइमरी कल्चर रेफर्स टू दैट सेल कल्चर इन विच द सेल्स आर कमिंग directly from an organ by mechanical or by enzymatic digestion. Once these cells are cultured in the petri plates or in the culture flask, then these cells they start growing, they start dividing, और ultimately एक स्टेज ऐसी आती है कि उस petri plate या culture flask की जितनी भी surface है, that is going to be covered by living cells which are continuously dividing. इस स्टेज को कहा जाता है confluency और confluent culture. This is a stage at which we have to passage these cells from one flask to other flask. अगर इस पिक्चर को देखा जाए, हमारे पास एनिमल सोर्स सेल कल्चर है जिसमें से हमने किसी भी मेथड के जरिए आइसोलेट किया इन सेल्स को। Now these are disintegrated tissue and individual cells. These cells are being cultured in this petri dish, and then we let them incubate, and they are going to be processed, or they are going to stay in that incubator for some time. Ultimately these cells are dividing and dividing and dividing and covering all the space which is available in the flask or the dish. This stage is referred as the confluent stage. Once this stage is achieved, we have to subculture the cells. जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, हमारे पास एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क में हमने सेल्स को कल्चर किया। सेल कल्चर reaches to the confluency. We have to make, or we have to spread the culture from one to two different flasks or so on, so that it keeps on going. After the first cell culture, the subculture, the primary cell becomes known as the cell lines
or subclones, and these cell lines can later be used for different experiments, लेकिन इनकी भी एक age होती है. After that the cells stop dividing. That is because of the senescence. These cell lines are continuously passaged from high growth capacity. They are going to come to a stage when they are going to be similar genotypically or phenotypically, and at that stage they may not be able to proceed further, and we have to stop this cell line and we have to go back to the living organism to get the new cells from that particular organism.